What is the body of the neuron called? What is the body of the neuron called? Short branches are called. Single long one is called. Branches of axon are called axon, which have vesicles. Vesicles are filled with. Example of neurotransmitter is acetylcholine. Okay. On है क्या देख? On है. Now we are going to talk about generation and conduction of a nerve impulse. Okay. In detail, we will talk about generation and conduction of nerve impulse. Okay. So for that, let us go back to our axon. You remember axon, everybody? On a neuron, how many axons are there? One or many? Many axons? See the diagram and tell me. Then how can you say many? प्राची ये फैन बंद कर देने वाला भी. I can't. वो यहीं पे है. One axon, right? What I did was I took the neuron and I removed out the axon. तो तुम्हारे सामने कौन है? Axon है. समझा मैंने क्या किया? ये जो न्यूरॉन था, ऐसे न्यूरॉन था, उसके पास एक्सॉन है, फिर ये क्या है बच्चों लोग? डेंड्राइट्स है, और ये कौन है उसका? साइटॉन है. अगर आगे कंटिन्यू करता तो उसका क्या आता था ये बच्चों लोग? साइनेप्टिक नॉब्स वगैरह जो मैंने बताया आपको, बराबर. 11th स्टैंडर्ड में इसको काफी डिटेल में हम लोग ने किया था. तब मुझे पूरे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड ओनली in the axon. And as you must be remembering, the membrane of the axon is called as the exolemma. Right children? और इसके अंदर जो लिक्विड है, साइटोप्लाज्म है, उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म के लिए दूसरा नाम है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. सेल के अंदर का लिक्विड, और उसके बाहर का जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. हाँ, ये दोनों वर्ड समझ में आ गए? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. जो एक्सॉन के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर. और जो एक्सॉन के बाहर है उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. सही है. नाउ लेट अस टेक अ माइक्रो इलेक्ट्रोड and insert it in the exoplasm and connect it to a voltmeter. हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया. जो फिजिक्स का माइक्रो इलेक्ट्रोड आता है वो सेल के अंदर डाल जा, तो उसको मैंने एक्सॉन के अंदर डाला, उसको वोल्टमीटर से कनेक्ट किया ताकि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं देखा जाए. और अमेजिंगली मुझे ये पता चला कि उसका जो नीडल है वो -70 मिलीवोल्ट पे आके डिफ्लेक्ट हो गया. मतलब नीडल जीरो पे नहीं रुका, नीडल डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स -70 मिलीवोल्ट्स. इससे ये पता चलता है कि जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो -70 मिलीवोल्ट्स है, मतलब इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, सो ये माइक्रो इलेक्ट्रोड डालने के बाद I came to know that the exolemma is not a normal membrane. The exolemma is a charged membrane. It has a polarity. Just like a magnet has got north pole and south pole, the exolemma shows the presence of electropositive charges outside, electronegative charges inside. So is exolemma a normal membrane or is it a charged membrane? Charged membrane. With a resting membrane potential. With a membrane potential of how much? I've written it though. You should loudly say that. How much is it?
मतलब outside it is electro, inside it is electro. So my exolemma is not a normal membrane, it is a charged membrane with a resting potential of minus 70 millivolts. Is this point clear, everybody? Yes or no? So we say that the exolemma has a RMP, resting membrane potential, of minus 70 millivolts. Such a exolemma is said to be in a polarized state. What is this state called, bachcho log? Polarized state. And how much is the resting membrane potential? Minus 70 millivolts. So NCRT makes a statement that neurons are excitable cells. It says neurons are excitable cells. I will add one more thing over there. Neurons are excitable cell because they already are in a polarized state. They are excitable cells because they are only in a polarized, because they are already in a polarized state. I hope you got my point, Bachilo. Ayana. Some of the areas in India are excitable areas because they are already in a polarized state. It's a political line. Like for example, there are some areas in India जहां पे लैंग्वेज के ऊपर मैं दंगे कर सकता हूं कि हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों में, जैसे साउथ में गया मैं, वहां पे ऑलरेडी वो लोग पोलराइज्ड है, उनको हिंदी इतना पसंद नहीं है, वो लोग को उनका लैंग्वेज पसंद है, तो ऑलरेडी वो लोग क्या है, पोलराइज्ड है, इसलिए मैं उनको क्या कर सकता हूं, एक्साइट कर सकता हूं. मेरा रिलेशन समझ में आया? हो सकता है कहीं पे रिलीजियस पोलैरिटी रहता है, एक रिलीजन डोमिनेंट है और वहां के लोग पोलराइज है, उनको थोड़ा सा मैंने कांडी किया, वो लोग भड़क जाएंगे. So that is what I mean by the neuron is already polarized. That is why it is excitable. Those people are already polarized. That is why they are. Got the correlation what I'm trying to make? So NCRT says that neurons are excitable cells. Why? Because they are already in a. And what is the polarized state? बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव. इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड. आगे बढ़ू भी मैं. Have I explained to you what makes it in a polarized state? No. अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्सोलेम्मा या क्यों न्यूरॉन ऑलरेडी एक पोलराइज स्टेट में है, तो उसके पीछे के रीजंस देखेंगे हम लोग. ओके, एंड द रीजंस आर दैट द exolemma has different type of ion channels. It has different type of ion channels, which makes the exolemma a differentially permeable membrane. It is more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. These are the lines of the NCRT. Exolemma has ion channels and it is more permeable to potassium, and the NCRT says it is nearly impermeable to sodium. So what does exolemma have? Ion channels. It is more permeable to potassium and is nearly impermeable to sodium. इससे क्या लेना देना इस पोलराइज स्टेट का? हाँ, तो चलो एनसीईआरटी ने तो लाइन बोल के छोड़ दिया, उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको कि what are these ion channels. In the chapter cell structure and transport in plants, we have already told you that there are porine protein channels called ion channels.
Yes, you remember that, बच्चों? So if you look at the exolemma under the microscope, on the exolemma, I see the presence of channels. This is the exolemma. This is the exolemma. We are observing it under the microscope. Do you see it shows the presence of ion channels? You know what are these? Proteins. And in center में जो है इसके through ions अंदर बाहर कर सकते हैं. So that is why they are called as what? Ion channels. These ion channels do not have any gate. ये देखो मैंने अभी गेट बनाया. इन ion channels के ऊपर ऐसे गेट नहीं है. That is why these are called leakage channels. Okay? And these leakage channels are of two types. They are leakage channels of sodium and they are leakage channels of potassium. So on the exolemma, there are ion channels. One of the type of ion channels is leakage channel of potassium and leakage channel of sodium. From the diagram, can you tell me whose leakage channels are more? किसके leakage channels ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? Potassium के. And they are more leakier. एक्सोलेम्मा पे पोटेशियम के लीकेज चैनल्स ज्यादा हैं और वो ज्यादा लीकियर है. इसका मतलब पोटेशियम का इनफ्लक्स ये ज्यादा होगा और सोडियम का इनफ्लक्स ये बहुत ही कम होगा. Did you get my point? As a result of which, in the exolemma, inside there will be more number of which ions? Loudly. K plus. And outside there will be more amount of Na plus. Is this clear, everybody? The exoplasm will have more K plus and the exoplasm will have more K plus and the extracellular fluid will have more amount of Na plus. What is the reason for that? Which channels? Leakage channels. Leakage channels of potassium are more in number as well as they are more leakier than the sodium leakage channels. As a result of which potassium will leak more inside. So inside there will be more amount of K plus and outside there will be more amount of Na plus. So imagine a situation कि आपके घर पे दो नल है, वो दोनों नल को बंद करने के बाद भी उसमें से पानी टपकता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसमें लीकेज है. एक में से पानी बहुत फास्ट टपकता है, टप 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 टप, तो वो कौन है? पोटेशियम का लीकेज. दूसरे में से एकदम स्लो अंदर आता है सोडियम. तो दूसरे में पानी एकदम कम जमा होगा कि नहीं? ओके. इज माय पॉइंट क्लियर, एवरीबॉडी? सो इनसाइड देयर इज मोर K plus, outside there is more Na plus. Inside if there is 10 K plus, outside there will be only 1 K plus. अंदर K plus ज्यादा हो गया. Na का देखते हैं. Inside if there is 1 Na plus, outside there are 30 Na plus. मतलब बाहर कौन है? सोडियम ज्यादा, अंदर कौन है? पोटेशियम ज्यादा. अब आप देखोगे तो बाहर का जो सोडियम है वो अंदर के पोटेशियम से कई गुना ज्यादा है. आया ना? और दोनों भी कौन से चार्ज के आयन्स है? तो बाहर पॉजिटिविटी कम होगा कि ज्यादा होगा? और अंदर पॉजिटिविटी, तो अंदर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे? So that is why it is inside electro and outside electro. Got the idea now? Okay. So we say that the LKC, that is leakage channels of K plus and leakage channels of Na plus. Look at the word. They create the
RMP, that is resting membrane potential, or which state? Polarized state. Is this first point of my clear with everybody? All of you understood? So how is the membrane of the neuron? How is the exolemma? Is it a normal membrane or is it a charged membrane? Outside is dash. Inside is correct, बच्चे लोग? And this polarity is created by, whom is it created by? Loudly. Called of where the potassium leakage channels are, then the so ICF will have more amount of and ECF will have more amount of, but the ECF का sodium is much, ECF का sodium is much more than the ICF का potassium. दोनों भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर का ECF का सोडियम अंदर के पोटेशियम से बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे? पॉजिटिव, और अंदर कौन से डेवलप होंगे? नेगेटिव. क्लियर एवरीबॉडी? डिड यू गॉट माय पॉइंट? सो व्हाट इज द आयोनिक ग्रेडियंट? अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि नॉर्मली इन अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हाट इज द आयोनिक ग्रेडियंट, मतलब कहां पे कौन सा आयन ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? ECF में सोडियम ज्यादा और ICF में पोटेशियम ज्यादा. तो टेंडेंसी क्या होगा? सोडियम विल ट्राई टू कम इनसाइड एंड पोटेशियम विल ट्राई टू गो, और अगर ऐसा होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए. व्हाट माय पॉइंट? दैट इज व्हाई देयर इज अनदर अरेंजमेंट ऑन द एक्सोलेम्मा which will maintain the RMP. What is RMP बच्चों? Resting membrane potential. Who will maintain the RMP? See, create नहीं मैंने word use किया. अभी क्या word use किया मैंने? Maintain. On the exolemma, there is a protein. There is a protein pump called sodium potassium ATP pump. क्या नाम है उस पंप का? ATP pump. It will pump out 3 Na plus and it will take in 2 K plus. What is the pump doing? It is pumping out 3 Na plus and taking in 2. So is it working along the gradient or against the gradient? ग्रेडियंट का था सोडियम बाहर से अंदर आना चाहिए था, पोटेशियम अंदर से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये पंप एग्जैक्टली उल्टा कर रहा है. वो और सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर ले रहा है. सो इट सीज टू इट कि अगर ग्रेडियंट के हिसाब से अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई चेंज आने वाला नहीं है. बाहर फिर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव. Okay, got my point? So who creates the resting membrane potential? नहीं समझा किसी को तो आंसर क्यों नहीं दे रहे? Who creates the resting membrane potential? Which ion channels? Leakage बोला ना, leakage channels. And who maintains the resting membrane potential? Sodium potassium ATP pump. दोनों में फर्क समझ में आया? आपने अगर एक्टिवा खरीदा है तो उसको बनाया किसने? होंडा कंपनी ने. खरीदने के बाद मेंटेन कौन करेगा? आप. तो क्रिएट करने वाला कौन है? LKC. और मेंटेन करने वाला कौन है? सोडियम पोटेशियम ATP पंप. I hope the class followed this point everybody clearly. The third reason is the exolemma is impermeable to negatively charged
proteins. The exolemma is impermeable to negatively charged proteins. Got it, everybody? The exolemma is impermeable to negatively charged proteins. So the concentration of negatively charged proteins will be more in the exoplasm or the extracellular fluid? Exoplasm, intracellular fluid. So it will be negative inside and it will be positive outside. Okay? So these are the three reasons, from the most important to the least important, which are responsible for keeping the resting membrane potential. Most important to least important, matlab not with respect to exam, with respect to their contribution. So if I ask you a question, who contributes the most for keeping the RMP? What is your answer? What are ion channel? Ion channel. All of them are ion channels, leakage channels. सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? Impermeability to negatively charged proteins. I hope very clear, everybody, up to here. Should I move to the next point? So I said that the exolemma is in which state? Polarized state. What is the polarized state? बाहर positive, अंदर negative. अंदर कितना negative? What is the value? What are the three reasons? LKC, sodium potassium ATP and impermeability to negatively charged proteins. Shall I continue now? Now let us see this statement. I hope everybody understood this part, that the neurons are in a polarized state. Which will make it them now? Now let me teach you what do you mean by excitation of a neuron. Okay? Already neuron कौन से state में? Polarized state में. तो अब हम देखेंगे second state, which is called as depolarized state or action potential. क्या कहते हैं उसको? तीन चीजें लिखी है, दो चीजें लिखी है मैंने. क्या क्या लिखा है मैंने? एक्शन पोटेंशियल. एंड एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइज्ड स्टेट को ही बोलते हैं कौन सा स्टेट बच्चों लोग? एक्साइटेबल स्टेट. ठीक है? लेट अस सी दिस पार्ट नाउ. सो लेट अस सी दिस नाउ. दिस is the axon. Outside, what are the charges? Positive. Inside, what are the charges? Negative. So it is electropositive outside, electronegative inside. Now, whenever a stimulus is received by the exolemma, जब भी कोई स्टिमुलस एक्सोलेमा रिसीव करता है, वो स्टिमुलस की वजह से पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती, बाहर बन जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और अंदर बन जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव. और ये चेंज को हम कहते हैं depolarized state, action potential and excitation of a neuron due to the stimulus. So if you touch a hot object, किसी गर्म चीज को आपने यहां हाथ लगाया तो वो हीट है, वो क्या है? स्टिमुलस है. वो हीट की वजह से, वो स्टिमुलस की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव. तो ये जो नीडल है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे कितने पे था? अब वो -70 पे ही रहेगा क्या? अब क्या हो गया? अंदर पॉजिटिव हो गया ना. सो इट विल मूव फ्रॉम -70 to 0
and from 0 it will go to positive. And how much is that? Plus 30 millivolts. So the action potential AP का value is approximately how much? Plus 30 millivolts. Did you understand this point? What do you mean by depolarized state? Because of there is a change in polarity. बाहर हो जाता है और अंदर क्या हो जाता है, और नीडल कहां डिफ्लेक्ट हो जाती है? प्लस 30 मिलीवोल्ट्स पे. और इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर डीपोलराइज स्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं द न्यूरॉन हैज अंडरगॉन एक्साइटेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट अस सी हाउ इट अंडरगोज दैट एक्साइटेशन. क्या हुआ उसके अंदर कि वो एक्साइट हो गया? ओके, सो एज सून एज it receives a stimulus. Let us see what are the changes that are taking place. I am looking once again on the exolemma. On the exolemma, there is another type of ion channel which is called mechanically gated sodium channels. These are called mechanically gated. Which channels? Sodium channels. Okay, because of the stimulus, the mechanically gated sodium channels will open up. पहले देखो ये गेट क्लोज था, अभी क्या हो गया? ओपन हो गया. किसकी वजह से ओपन हुआ? स्टिमुलस की वजह से. कौन ओपन हुआ? बोलो. क्या मैकेनिकली गेटेड? पूरा पढ़ने नहीं आ रहा तुम लोग को? क्या क्या लिखा है मैंने? बंद के खुल गए. किसकी वजह से? तो स्टिमुलस की वजह से पहले कौन खुलता है? So because of the stimulus, the mechanically gated sodium channels will open and little sodium will come inside. क्या मैंने बोला? Huge amount of sodium or little sodium? So opening of dash channels will cause a little influx of सोडियम. इसके पहले सोडियम अंदर ज्यादा नहीं आ रहा था, बट चूंकि मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए, थोड़ा सा सोडियम का क्या हुआ? इनफ्लक्स हुआ. सो एज लिटिल बिट ऑफ सोडियम हैज कम इनसाइड. अंदर अंदर कौन से चार्जेस थे पहले? नेगेटिव. वो नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिवली, क्योंकि सोडियम कौन सा चार्ज आयन है, और अंदर कौन से चार्जेस थे? तो अंदर का नेगेटिविटी बढ़ेगा कि कम होगा? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये जो नीडल -70 मिलीवोल्ट्स पे, क्या वो -90 तक जाएगा कि थोड़ा जीरो की तरफ जाएगा? एंड इट विल शिफ्ट एंड इट विल रीच -55 मिलीवोल्ट्स. पहले वो नीडल पूरा किस पे था? -70. थोड़ा सोडियम अंदर आया तो अभी और जीरो से दूर जाएगा कि नजदीक आएगा थोड़ा? और जैसे नीडल कहां पहुंचा? -55 मिलीवोल्ट्स. कहां पहुंचा? Look at the change that is going to happen. As soon as it reaches -55 millivolts, voltage gated sodium channels will open. एक नया चैनल मेंशन किया मैंने. क्या नाम उसका? इसके पहले कौन था?
जिसका खुलने का रीजन क्या था? इसका खुलने का रीजन क्या है? चेंज इन वोल्टेज। पहला वोल्टेज कितना था? अब नया वोल्टेज क्या डेवलप हुआ है? इसका मतलब अभी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। These are the channels, and their gates will open, and there will be huge influx of sodium. क्या हुआ बच्चों लोग? ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। तो थोड़ा सा कि बहुत सारा सोडियम अंदर आया, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा? चार्जेस कौन सी हो जाएगी? बराबर है ना? और इसी स्टेट को हम लोग कौन सा स्टेट बोलेंगे? डीपोलराइज स्टेट। तो डीपोलराइज स्टेट में अंदर कौन से चार्जेस हो जाते हैं और बाहर? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ विच आयंस? इनफ्लक्स और रिफ्लक्स? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सो डीपोलराइज स्टेट में पहला स्टेप क्या था? कौन आया बच्चों? स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से कौन खुल गए? मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से क्या हो गया? थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, तो वोल्टेज क्या हो गया? -55 तक पहुंच गया। जैसे -55 तक पहुंच गया, कौन खुल गया बच्चों लोग? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और ह्यूज सोडियम अंदर आ गया, and taking the resting membrane potential to plus 30 millivolts, and for this time the sodium potassium ATP pump has stopped temporarily for time being. Point is clear everybody? Yes or no? So that state is called as which state bachlo? Depolarized state. Okay, now if a question is asked to you, how much is the minimum voltage required in order to excite the neuron, what will be your answer? Minus 70? I'll give you three options: -70, -55, +30. How much is the minimum voltage to make your neurons excited? +30. +30 is the maximum value of depolarization. -70 is the maximum value of polarized state, and -55 is the minimum stimulation that is required for the voltage gated channels to open and sodium to come inside. Out of 100, how much is the minimum marks required by you to pass? 35. बराबर है कि नहीं? So for a neuron to get excited, stimulus का strength minimum कितना होना चाहिए कि वो एक्सोलेमा को कहां तक लेके जाए? -55 तक। अगर वो एक्सोलेमा को -55 तक नहीं लेके गया, तो वो स्टिमुलस एक्सोलेमा डिटेक्ट नहीं करेगा। आया समझ में? जैसे इफ आई स्टार्ट विद टॉकिंग वेरी सॉफ्टली, हेलो हाउ आर यू, गुड, will the last bench be able to hear? First bench can hear, but for the last bench the stimulus is a strong stimulus or a very slow stimulus? Will it excite their exolemma? No. So exolemma को excite करने के लिए minimum threshold कितना होना चाहिए? Minimum threshold मतलब passing marks. Threshold कितना होना चाहिए? -55. So -55 will be considered as which stimulus? Threshold stimulus. And action potential is how much? +30 millivolts. Did you understand the idea of threshold? What do you mean by threshold? Minimum passing marks. कि अगर एक न्यूरॉन को एक्साइट करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है कि जो भी स्टिमुलस है वो कहां तक लेके जाए उसको? -55 तक। समझ में आया आप सबको? Then the third state is called
repolarized state. What is the state called? Repolar. What was the first state? What was the second state? And what was the third state I'm talking about? And in the repolarized state, the needle will come back to where? Minus 70 millivolts. So in the repolarized state, the exolemma once again at that region will become outside electro and inside it will become electro. So can I say it has come back to whom? Its original polarity. That is why it is said to be which state? Repolarized state. So if you look at the polarized state there in that diagram, बाहर कौन है? बाहर कौन है? अंदर कौन है? इधर क्या हो गया? और इधर फिर से क्या हो गया? तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोलैरिटी पे जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? Repolarized state. Got it? So in a repolarized state, the neuron will come back to a polarity of minus 70 millivolts. What is the reason for that? The NCERT line is stimulus induced permeability to sodium is very short-lived. It is followed by increased permeability to K plus, where the K plus efflux out. Let me explain this statement to you. स्टेटमेंट का मतलब यह है कि डीपोलराइज स्टेट में एक एक्सोलेम्मा का सोडियम की तरफ का जो परमेबिलिटी था वो कम हो गया था कि बढ़ गया था? कम हो गया था कि बढ़ गया था? बढ़ गया था. कैसे बढ़ गया था? वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए थे, इसलिए बहुत सारा सोडियम. लेकिन एनसीईआरटी बोलते हैं ये जो अंदर आना था, ये जो परमेबिलिटी बढ़ गई थी, ये लॉन्ग लिव्ड है कि हाईली शॉर्ट लिव्ड है? मतलब इट विल अकर फॉर ओनली मिली सेकेंड्स. Immediately what happens is the voltage gated channels of sodium will close. मतलब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के ओपन हो गए थे फिर से क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. और जैसे ही ये क्लोज हो जाते हैं और सोडियम अंदर आ पाएगा? नहीं. तो ये जो नीडल है will it go beyond plus 30? No. Did you get my point? So first thing you remember is there will be closure of VGC, that is the voltage gated channels of sodium. So will more sodium do influx? No. Second thing that will take place is there will be opening of voltage gated channels of K plus. क्या खुल जाएंगे? Voltage gated channels of, and look what will happen because of it. ये वोल्टेज गेटेड चैनल है VGC ऑफ K प्लस. आपको क्या दिख रहा है? खुला है कि बंद है? ये इसका गेट खुला है कि बंद है? बंद है. अब मैं अगर बोल रहा हूं कि प्लस 30 पे जाने के बाद वो खुल रहा है, तो देखो डायग्राम में चेंज. खुल गया है नीचे का चैनल, जिसके वजह से देयर इज अ ह्यूज इफ्लक्स. इफ्लक्स मतलब अंदर आना कि बाहर जाना? इफ्लक्स ऑफ व्हाट? सोडियम और K प्लस. एंड K प्लस विल गो आउट. Who goes out? K plus.
K plus is which charge ion? Positively charged ion. Isn't it बच्चों लोग? तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी कम होगी? नींद में बढ़ेगी. K प्लस अगर बाहर जा रहा है तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्या होगी? कम होगी. तो अंदर कौन से चार्जेस आ जाएंगे? और बाहर क्या आ जाएगा? And will go back to which state? So which ion, अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, which ion is responsible for repolarization? सोडियम. सिद्धार्थ झोपेत आहे. Which ion is responsible for repolarization? Influx of K plus or efflux of K plus? And which ion is responsible for depolarization? Influx or efflux? Got the idea? So it is the huge of, जिसके से पॉजिटिव चार्जेस कहां गए? बाहर. और पोलैरिटी फिर से कितनी कितनी आ गई? आया ना? लेकिन बच्चों पोलैरिटी तो आ गई, लेकिन क्या अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो आयोनिक वैल्यू था वो आ गया? वो क्या था? बाहर क्या जाना ज्यादा होना चाहिए? सोडियम. अंदर क्या होना चाहिए? था ना ये रूल? तो जो एलकेसी है वो तो कभी बंद हुए ही नहीं थे, वो क्या रहेंगे? खुले. एक टाइम आने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? बंद. तो क्या और के प्लस बाहर जा पाएगा? नहीं. और एलकेसी तो ओपन है ही, तो फिर से अंदर कौन आएगा बच्चों लोग? के प्लस. आया समझ में? एंड सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप will once again what? Restart. Did you get my point? So what happens during repolarized state? The exolemma goes back to its original polarity of how much? Minus 70 millivolts. How? First is, जैसे वो +30 पे जाता है, कौन से चैनल्स बंद हो जाते हैं? जैसे ही वो +30 पे जाता है, +30 मिलीवोल्ट्स पे, कौन से वाले चैनल्स बंद हो जाते हैं? वोल्ट. पूरा बोलो भाई. तो और सोडियम अंदर आएगा? नहीं. सो परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम वॉज लॉन्ग लिव्ड और शॉर्ट लिव्ड? थोड़ा टाइम के लिए वो अंदर आया था. अब कौन से चैनल्स खुल जाएंगे? पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड पोटेशियम. तो पोटेशियम क्या होगा? अंदर आएगा कि बाहर चला जाएगा? तो बाहर कौन सा चार्ज आएगा? और अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आया बात समझ में सबको? अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो वापस आ गया, लेकिन अभी तक एक डिस्टरबेंस है. क्या है वो डिस्टरबेंस? सोडियम अंदर ज्यादा है और पोटेशियम बाहर. एक्चुअली पोटेशियम बाहर ज्यादा हो चुका है अभी. तो अभी क्या होना चाहिए? एलकेसी चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से पोटेशियम अंदर आना स्टार्ट होगा. सोडियम पोटेशियम पंप भी चालू हो जाएगा, तो सोडियम क्या हो जाएगा? बाहर पंप आउट हो जाएगा. तो ऐसा एक एक्सोलेम्मा कितने स्टेजेस के थ्रू जाता है? 3. कौन से? इन द फर्स्ट ईयर मेडिसिन यू हैव 4: पोलराइज, डीपोलराइज, हाइपरपोलराइज एंड रिपोलराइज. हाइपरपोलराइज का कंसेप्ट अभी नहीं है अपने को 12th के लेवल. इसे थोड़ा सा कुछ डिटेल्स यहां पे मिसिंग है. ओके. तो अपने को 3 स्टेजेस ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि तीनों स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है. तो उसका अगर समरी चाहिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं उसको, कि 3 स्टेजेस का नाम लिखते हैं. पहला स्टेज कौन है? पोलराइज वाला. सेकेंड वाला डीपोलराइज्ड. थर्ड वाला कौन सा स्टेज है? रीपोलराइज्ड. ये हो गया 3 स्टेज. अब चैनल्स का नाम लिखते हैं. एलकेसी. वो इज एलकेसी? लीकेज चैनल्स. उसके बाद है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप. उसके बाद है वीजीसी ऑफ सोडियम
VGC ऑफ क्या लिखा मैंने, पोटेशियम. ओके आदित्य, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी इन पोलराइज स्टेट इसमें से कौन सा ओपन रहता है, कौन सा क्लोज रहता है. LKC ओपन, बंद रहता है पक्का. डू यू ऑल एग्री विथ हिम? गिव मी यस और नो. हाउ इट इज बंद, टेल मी. If it is bun, who will maintain the resting membrane potential? So sodium potassium pump open है कि बंद है? Open है. VGC of sodium बंद है. VGC of potassium बंद है. कौन से स्टेट में? पोलराइज स्टेट. सेकेंड स्टेट कौन सा आया? लीकेज चैनल्स. डीपोलराइज स्टेट में ओपन होंगे कि क्लोज होंगे? उनको क्लोज होने का चांस ही नहीं, वो तो लीकेज है ना, वो तो हमेशा क्या रहेंगे? ओपन. सोडियम पोटेशियम एपीपी पंप चालू की बंद है? बंद है. VGC ऑफ सोडियम, VGC ऑफ पोटेशियम रिपोलराइज स्टेट में. लीकेज चैनल्स, सोडियम पोटेशियम ओपियम, VGC ऑफ सोडियम, VGC ऑफ पोटेशियम. तो शॉर्ट में याद रहेगा ये पूरा, आया ना? सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोलराइजेशन? देखो ये चार्ट, वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ influx or efflux? Efflux. Is responsible for what? Depolarization. Who is responsible for depolarization? Influx or efflux? Efflux. Who is responsible for polarized state? And but out of these two, which is more important? पहले डिसाइड कर लो, who is more important between the two? लीकेज चैनल्स. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? हु क्रिएट्स इट? लीकेज चैनल्स. हु मेंटेन्स इट? सोडियम पोटेशियम. ओके, सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? लीकेज चैनल. आफ्टर दैट हु इज इंपॉर्टेंट? Did you get it, everybody? Yes or no? So what are the three stages that the neuronal exolemma goes through? Yes. Polarized, depolarized, repolarized. So this is a neuron. It's a myelinated neuron. Myelinated neuron मतलब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे myelin sheath. Yes. Who will come here? Myelin sheath. Is the myelin sheath continuous or discontinuous? Discontinuous. What are the gaps called? Nodes of Ranvier. So this is node A, B, C and D. Outside which charges? Which charges? Loudly. Inside. This is called as the polarized state. बाहर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. अंदर नेगेटिव. इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइज स्टेट. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ एज सून एज देयर इज अ स्टिमुलस, जैसे कौन आया? स्टिमुलस. और वो स्टिमुलस को स्लॉट ए ने रिसीव किया. किसने रिसीव किया? स्लॉट ए ने. तो जैसे स्लॉट ए ने रिसीव किया, उसमें पहले कौन खुल जाएगा? स्लॉट ए ने जैसे रिसीव किया, पहले कौन खुलेगा? डायरेक्टली वोल्टेज खुलेगा, पहले मैकेनिकल खुलेंगे. थोड़ा सा कौन अंदर आएगा? फिर थ्रेशोल्ड कितना जाएगा? फिर कौन ओपन हो जाएगा? वोल्टेज गेटेड. तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. बाहर कौन आएगा? लेकिन बाकी के चार्जेस वैसे का वैसा ही होगा.
So what we'll say, slot A has undergone excitation, या फिर yeah, it is showing a dash potential. Clear everybody? The positive charges will be attracted by negative, negative will be attracted by. So there is a disturbance on slot A, it will affect the slot. Slot A will go back to repolarize and slot B will become what बच्चों लोग? Depolarize. So अभी slot B पे क्या आएगा बच्चों लोग? बाहर नेगेटिव, अंदर, और स्लॉट ए पे बाहर पॉजिटिव, अंदर, और आगे जितने भी होंगे वैसे के वैसे ही है. थर्ड डायग्राम में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो अपने. कौन जाएगा सी पे? डी मतलब एक्शन उधर ही रहेगा कि आगे बढ़ रहा है? कौन आगे बढ़ रहा है? या फिर डी, या फिर एक्साइटेशन? Does it remain there or does it travel along the exolemma? Who is traveling along the exolemma? So the depolarization or the action potential is traveling along the exolemma, and that is called as a nerve signal or a nerve impulse. समझा what is a nerve signal or a nerve impulse? What is a nerve signal or nerve impulse? Don't rectify that. Nerve impulse क्या है? कि जैसे स्टिमुलस आया वो रीजन क्या हो जाता है? डीपोलराइज. फिर वो उधर रुकता है कि आगे बढ़ता है? ये जो डीपोलराइजेशन आगे बढ़ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स है या फिर नर्व सिग्नल है. अलग कंसेप्ट लक्षात. Did you all understand up to here everybody? Yes or no? So you say that in physics a wire, when the electron pass from one end to another end, you get electricity. Yes or no? In our axon also, do electrons flow from one end to another end? No. What flows? Action potential. So that is why, what is the right way to define it? Is it an electrical signal or an electrochemical signal? Electrochemical signal. So the nerve impulse will be called as what? Electrochemical signal. है ना? क्या कहेंगे उसको? Not electrical signal. So if I touch a hot body here, what is my skin made up of? What is my skin made up of? Neurons. So as soon as I touch the hot body, the neurons over here will get matlab depolarize. Will the depolarization remain there or move forward? Where it will reach? CNS. What will the CNS send? Another action potential. To whom? Bicep. So the sarcolemma will get what contract? It will get depolarized. As soon as the sarcolemma gets depolarized, under calcium gates will bind to troponin. It will mask the myosin binding sites on actin. Cross bridge will be formed. It will unmask. Myosin head will rotate inside. Sarcomere will undergo contraction. Muscle will undergo contraction. Once again, touch a hot object. What is skin made up of? The region of the exolemma will get. Will the depolarization remain there? Where it will go? Yes. This will be called as a nerve. So we'll say the nerve impulse has reached the CNS. The CNS will send another to the. So the bicep ka sarcolemma will get, because of the depolarization on the sarco मसल के अंदर के कैल्शियम चैनल्स, वो कैल्शियम जाके किसको बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन अनमास्क कर देगा. किसको? इसके लिए मायोसिन हेड किससे ज्वाइन होगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी होगी. मसल विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. गॉट द होल रूट?
If you keep a chocolate on your tongue, what is your tongue made up of? Neurons. The chemical in the chocolate will act as a stimulus. Because of the neuron will undergo loudly, which will go to your the brain. The brain will interpret it, understand it as a taste. If it is a coffee chocolate, it will find it bitter. If it is sugars, it will find it sweet. Now the brain will send another wave of action potential to your tongue or salivary glands. Salivary glands will secrete saliva, your mouth will become full of saliva. You got my point, everybody? Another example. Apply some perfume on your hand. Okay? Don't take a bath, that is different, but apply a perfume at least. So you apply a perfume. Do you see the molecules of perfume diffusing out? No. Invisible. Hai. But the molecules go in your nose. Your nose has got the neurons will undergo. It will go to your and the CNS will interpret as a smell, a fragrance in this case. I hope you're understanding. So does the heat of the object reach the brain? Give me yes or no. Does the sugar of the chocolate reach the brain? Does the smell, the perfume molecules reach the brain? Or does my sound reach your brain? What reaches your brain? Action. And the brain will store the action as a previous memory and it will act accordingly. I hope you got my point. Will you go home and touch a hot flame? Yes. Why? Are you drunk? High on fentanyl? Will you touch a hot flame? No. Why no? Because it is a previous memory कि चटका लगा था मेरे. समझा मेरा बात? So जो भी हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी लर्न कर रहे हैं, ये एक्चुअली कौन से फॉर्म में जाता है? इंग्लिश वर्ड के फॉर्म में जाता है तो मराठी में जाता है. What it goes? And the more the action potentials go, the neurons who are involved in that action potential will become depolarized more and more times. So they'll become strong networks. And that will create a memory. समझा मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना बार वो फायर करेगा न्यूरॉन. कहां पे? ब्रेन में. और उतना उसका नेटवर्क क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग. So then if you close your eyes, then also it will come in front of you. Just like the face of your mother. If I tell you, remember your mother. मालूम है किसका चेहरा आया? 2 3 सोचना पड़ा. क्यों? क्योंकि इतनी बार एक्शन पोटेंशियल आपके ब्रेन के थ्रू जा चुके हैं कि उसके न्यूरोनल नेटवर्क स्ट्रांग हो गए, वीक हो गए. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चलो, you understood what is memory? So tell me in simple words, in biological word, what is memory? What is yaddash? Strong neural networks having action for that particular thing. I hope you got my point. When you go home, आपका जो घर का दरवाजा ये रास्ता है, एक बार गए हो कि बहुत बार गए हो? चलो, तो डू यू हैव टू स्टार्ट योर गूगल पे गूगल ऐप ओवर देयर मैप? नहीं ना, कि वो भी चालू करना पड़ता है आपको. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी. लास्ट लेक्चर का कुछ पूछूं तो कुछ याद नहीं रहेगा. आप आप करना चालू करो. बराबर है? क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है. यस मैडम, ओवर देयर बिसाइड प्रियंका बनकर. हाँ, स्टैंड अप. What are the 3 stages of conduction of an impulse? And what are the values for the 3? -55. It is -70 +30 and once again minus. Why -55?
-55 आता ही नहीं ना कहीं पे भी. What is the polarized का वैल्यू? What is the depolarized का वैल्यू? What is the repolarized का वैल्यू? तो -55 कहां से आया मैडम? फिर नहीं नहीं क्या बोल रहा, कुछ भी आंसर देता है. हाँ डिमविट. Once again tell me, what are the values? -70. पहला वैल्यू कौन सा है? क्या है वो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड से आप लोग उसको देना आंसर बच्चे लोग. हाँ, डोंट ट्राई टू बी मदर टेरेसा. बोलो. सेकेंड इज what is that state? I'll not cheerlead. I'm not a cheerleader for you. You give the answer. Is the and who is responsible for repolarization? Who is responsible for repolarization? Who? No? There's the boy next to Dubey, yeah, blue shirt. Me, I'm wearing blue shirt, and I'm a boy. Well, tell me fast. सीधा just बंद कर पड़ रहा है video. Okay. The next thing would be transmission of impulse. So what are we talking about? Transmission of impulse. Okay. We'll discuss transmission of an impulse through a chemical synapse. Okay. This word I think so in 11th standard I had introduced this word to you. Synapse. ये word सुना था हम लोग ने? Synapse. दुबे जी बताएंगे. बताइए दुबे जी, what is synapse? हाँ हाँ कर रहे थे वहां पे बत्ती सी दिखा दिखा के. तो क्या है? भूल गए. किसको याद है साइनैप्स? यस मैडम, आपको याद है साइनैप्स? नहीं. किसको याद है? व्हाट इज द साइनैप्स? याद होगा. ओके, let's talk about that again. So I'm going to discuss transmission of an impulse via a chemical synapse. Okay, let's see what's a synapse. This is one neuron. Okay, what is this circle? Cyton. Chota wala? Single long one? Axon. Who is this blue one? Another neuron. So this is axon, this is the dendrite. Do you see the axon and the dendrite are physically connected? No. Do they leave a gap? Yes. This gap is called synaptic cleft. What do you call the gap? Synaptic. Understood the meaning of the word synaptic cleft? That the axon and the dendron are not physically connected. They leave a gap which is called as the synaptic cleft. ये बात समझ में आया सबको? What is the synaptic cleft? अब आगे बढ़ते हैं. Now this black one, axon, it is before the synaptic cleft, right? So it will be called pre-synaptic membrane. Okay, this blue one, we'll call it as the post synaptic membrane.
So we have the pre-synaptic and the post-synaptic. Clear all of you? धीरे धीरे बढ़ते देखो. Now let me draw the pre-synaptic. ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन का नॉब है, और एक्सॉन के नॉब की जो मेम्ब्रेन है, इट विल बी अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, ब्लैक कलर अपन सेम रखेंगे. ब्लू वाला डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है, तो वो हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. चलो ये बड़ा वाला डायग्राम समझ में आया सबको? इतने रीजन का वो जूम किया हुआ पार्ट. सही है वो. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा आदित्य, इज देयर इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन? यस. हाँ, लेकिन अभी नहीं. सो राइट नाउ सेट, राइट नाउ देयर इज अ इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी. क्या अभी इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी? इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि सर अगर ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा, मतलब बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, तो चूंकि यहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, बीच में साइनेप्स है, वो इंपल्स आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी है. डिसकंटिन्यूटी. आलं लक्षात काय सांगितलं? हे जर इकडे डायरेक्टली कनेक्टेड असतं तर आपण हे डिस्कशनच नसतो करत. आलं की नाही लक्षात? आपण असं बोललो असतो की इकडे काय आहे? इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी आहे. पर चूंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी नहीं है, एक सिचुएशन अराइज हो गई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल साइनेप्स. मतलब अभी कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी जिसके मदद से इंपल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पास ऑन होगा. आया प्रॉब्लम समझ में सबको? डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो नाउ let us look into the presynaptic membrane. Let us look into the presynaptic membrane. मतलब अभी मैं डेंड्रॉन के अंदर जा रहा हूं कि एक्सॉन के अंदर? बी कॉन्फिडेंट, टेल मी, डेंड्रॉन के अंदर या एक्सॉन के अंदर? और एक्सॉन के अंदर जो वेसिकल्स आपको 11th में मैंने बताया था, साइनेप्टिक वेसिकल्स बताया था हम लोगों को, अपन ने टिश्यू चैप्टर में किया था. व्हाट आर दीज कॉल्ड? वेसिकल्स. Correct, kids? And inside the vesicles there are chemicals, and these chemicals are called neurotransmitters. And let that neurotransmitter, for the sake of understanding, be what बच्चे लोग? Acetylcholine. Who is the neurotransmitter बच्चे लोग? Acetylcholine. Okay. And on the postsynaptic membrane, what are present? Receptors. The shape is like a lock and a key. Shape is like a lock and a key. They will fit into each other. Okay. Now, as the impulse reaches, where does it reach? The presynaptic membrane. कहां आ गया? आगे पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिकल discontinuity because of the presence of a synaptic cleft. See the change. Okay. ये कौन है बच्चों? एक्सॉन. ये कौन है? एक्सॉन नॉब. ओके. इंपल्स आके रुक गया. कहां पे आके रुक गया? ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. द फर्स्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस, ये रुकने की वजह से देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ
कैल्शियम आयंस। कौन अंदर घुस गया बच्चे लोग? कैल्शियम आयंस। एंड the vesicles they will fuse with the प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कौन फ्यूज हुआ? वेसिकल्स। किसके साथ? प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। और अंदर का जितना भी क्या था बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसको अंदर रखा कि बाहर फेंक दिया? उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर फेंकना, एक्सो बाहर, साइटोसिस सेल के बाहर फेंक दिया। किसको फेंक दिया? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। हम भी तो वही चाहते थे। अब क्या होगा? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके बाइंड करेंगे। किसको बाइंड करेंगे बच्चे लोग? रिसेप्टर्स को। जैसे ही रिसेप्टर्स को बाइंड किया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे एंड देयर विल बी ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ व्हाट बच्चे लोग? सोडियम आयंस। जिसकी वजह से अभी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हो जाएगा अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव। देखो यहां पे क्या था? बाहर की तरफ, अंदर क्या था? इधर भी बाहर नेगेटिव, अंदर, मतलब एक्शन पोटेंशियल हैज मूव्ड फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू द via the neuro. It's a chemical, so that is why the synapse is called which synapse? Chemical synapse. Okay? क्या क्या स्टेप्स हुए इसके अंदर? ये सेकेंड डायग्राम में इनफ्लक्स ऑफ व्हाट बच्चे लोग? कैल्शियम। सेकेंड क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस ऑफ व्हाट? एसिटाइल कोलिन, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। थर्ड स्टेप क्या हुआ इसके अंदर? क्या हुआ सर? बाइंडिंग। फिर फोर्थ स्टेप क्या हुआ इसके अंदर बच्चे लोग? देयर इज एक्शन पोटेंशियल ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। What my point? Now the next step is the axon releases an enzyme. Who releases an enzyme? Axon. And that enzyme will break the neurotransmitter and put it back into the vesicle. So once again, what has come back? Synapse. Axon releases the enzyme which will break the neurotransmitter and put it back in the where बच्चे लोग? Axon. As a result of which the synapse will come back. मतलब the gap will be coming back. The electrical discontinuity will be restored. What my point? Did you get it? So what did we understand? The original state is the state of discontinuity. For a very short time, who had come? Neurotransmitter. Look at my hand. पहले क्या था? कुछ नहीं था, बीच में गैप था। फिर बहुत ही छोटे टाइम के लिए कौन आया बच्चे लोग? न्यूरोट्रांसमीटर। और तुरंत वो न्यूरोट्रांसमीटर को हटा के फिर से क्या आ गया? गैप आ गया। Got my point? So what is the original state? Gap. फिर neurotransmitters. Once again the gap. Okay. Now what is the explanation that we give to explain कि ऐसा क्यों होता है? Why do you keep a gap over there? बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके उस गैप को फिल करके फिर से गैप क्यों लेके आते? ओके, तो उसका एक रीजन ऐसा देते हम लोग कि इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज अलाउ बच्चे लोग? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि इंपल्स हमेशा कहां जाएगा?
एक्सॉन टू एक पर्टिकुलर डेंड्रॉन, बराबर है। इट विल नॉट गो फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, और वो उसी डेंड्रॉन पे जाएगा जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आल लक्षात। हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन हो बच्चों कि ये कौन है, न्यूरॉन है, और उसके नजदीक एक एक या बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे, सही है ना। लेकिन ये वाला जो है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर दिखा रहा है, ये वाला गाबा रिसेप्टर्स दिखा रहा है, ये ग्लूटामिक एसिड वाला रिसेप्टर्स दिखा रहा है। तो अपने न्यूरॉन जो है ये वाला सिग्नल किसको देगा, फर्स्ट सेकंड की थर्ड को देगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ना इंपल्स, बराबर। सो इवन यू हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स but the signal will go only in a specific direction. Is my point clear, everybody? So that is why you will require a synapse there. Second reason that I read in the Guyton book of medicine is कि अभी ना आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना पड़ेगा, फिर कुछ सेकंड के लिए न्यूरोट्रांसमीटर को हटा दिया जाएगा, फिर से रिलीज होगा। मतलब एक इंपल्स जब ब्रेन तक पहुंचता है तो तुरंत पहुंचता है कि मिली सेकेंड्स के गैप रहते बच्चों लोग, हाँ या ना। और उतना टाइम फिर ब्रेन को मिल जाता है अलग अलग स्टिमुला के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। आया बात समझ में? देखिए बच्चों, हमारे लिए एक सेकेंड बहुत ही छोटा है, जिसके अगर मैं घड़ी की तरफ देखूं हो गया एक सेकेंड, लेकिन एक सेकेंड ब्रेन के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रेन मिली सेकेंड्स में काम करता है। आया बात समझ में? तो उसको जो दो इंपल्सेस के बीच में मिली सेकेंड्स का गैप मिलता है, उसके अंदर वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि अभी मुबिन सर बोल रहे हैं, मुझे उनका बोर्ड वर्क दिखाई दे रहा है, ये सब सेम सिग्नल है कि अलग अलग सिग्नल है बच्चों? फिर भी आपके ब्रेन को समझ में आ रहा है कि ये आवाज है, ये साइट है, बराबर है ना। कुछ अलग आवाज आ रही है फैन की, सब अलग अलग सिग्नल एक ही टाइम पे समझ में आ रहे हैं। हमारे लिए तो एक सेकेंड है, लेकिन ये ब्रेन के लिए एक सेकेंड बहुत ज्यादा है। उसको वो मिली सेकेंड के अंदर हजारों इंपल्सेस आते हैं, और सबके बीच में क्या कर सकता है, वो डिफरेंशिएट कर सकता है। वो इतना सब काम कितने सेकेंड में करता है, एक सेकेंड के अंदर। आर यू गेटिंग द एक्सप्लेनेशन इन रिलेटिव टर्म्स? मैं टाइम के रिलेटिव टर्म्स में समझा रहा हूं आपको इस बात। आई होप यू गॉट इट एवरीबॉडी। सो इफ समबडी इज आस्किंग यू कि सर इसमें क्या लॉजिक हुआ, व्हाट इज दिस लॉजिक, कि पहले क्या था, गैप, फिर कौन आया, साइनैप्स था पहले से ही, फिर कौन आया, न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसको वही रखो ना। बार बार निकाल के क्यों रख रहे हो, बार बार निकाल के क्यों डाल रहे हो उसको? तो उसके एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? कि इंपल्स हमेशा एक्सॉन टू डेंड्रॉन ही जाएगा, उल्टा डेंड्रॉन टू एक्सॉन नहीं जाएगा, बराबर है। और दो इंपल्सेस के बीच में क्या आएगा, मिली सेकेंड्स के, उसके बीच में ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। द सेकेंड टाइप of synapses are called electrical synapses. So the explanation that I gave you right now is for which type of synapse? Chemical synapse. Now I am talking about which synapse? Electrical synapse. So this is the presynaptic membrane. Okay, and here we have the which membrane बच्चे लोग? Postsynaptic membrane. Okay, so this is a pre and this is post. But now if you observe, okay, the pre and the post, are they showing electrical continuity or not showing electrical continuity?
showing an electrical conductivity with the help of gap junctions. ये जो मैंने बनाया वो कौन है? जैसे किसी एक को मैं ऐसा थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं. अपने 11th स्टैंडर्ड में किया था ना गैप जंक्शंस, कि ये एक प्रोटीन है इधर का, इधर की प्रोटीन, तो दोनों मिलके कौन सा जंक्शन बना रहे हैं बच्चों? गैप जंक्शंस. So my question is, will now the impulse stop on the presynaptic membrane, wait for a chemical, or will directly go? Directly go. So that is why the NCERT says that the electrical synapses are much slower or faster than chemical synapses, but the electrical synapses are rare in humans. बताइए मैं दोनों में फास्ट कौन है? बट ह्यूमन बींग्स में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होते हैं? रेयर होते हैं. हमारे में कौन से साइनेप्सेस है? ऐसा क्यों? कौन से साइनेप्स बेटर है बच्चों, इलेक्ट्रिकल की केमिकल? वाई केमिकल सिद्धार्थ? ओके, और कोई दूसरा रीजन? अगर आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई कंट्रोल नहीं बच्चों, सिग्नल्स किधर कुधर भी जा सकता है, इधर से इधर कूदा, उधर से इधर कूदा, कुछ नहीं कंट्रोल है इसके ऊपर. इसलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. जैसे हाइड्रा वगैरह देखा ना उन्होंने, हाइड्रा क्या ना बोल रही है? हाइड्रा नहीं मालूम तो देखा नहीं. फोटो भी था मॉड्यूल में, अभी भी है फोटो. देखो ये मेरी लेने बैठी है अभी यहाँ पे. तो हम लोग ने हाइड्रा देखा है कि नहीं देखा? ये मुग्धा को छोड़ दो, हाँ बाकी सब लोगों ने हाइड्रा देखा है. हाँ, उसमें कौन सा साइनेप्सिस है? हायर ऑर्गेनिजम्स में कौन से साइनेप्स ज्यादा हो गए? बिकॉज दे आर मोर कंट्रोल्ड. केमिकल साइनेप्सिस आर मोर कंट्रोल्ड साइनेप्सिस. आई होप यू गॉट इट एवरीबॉडी. अरे जा रहा है, दिमाग में जा रहा है तुम्हारा. The last line in the NCERT, not last line for you today, okay? The last line in NCERT is that the impulses, the new potential develop may be either excitatory or inhibitory. क्या बोला उसको? The new potential may be what? Excitatory, or it can be what बच्चों लोग? Inhibitory. सुन रहे हो मेरी बात? देखो अभी एक्साइटेटरी तो समझ में आता है कि वो भी नहीं समझ में आता. व्हाट डू यू मीन एक्साइटेटरी? ये कौन है? न्यूरॉन है. न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया? एसिटाइल. एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड किसको हुआ? दूसरे न्यूरॉन को. तो उसने डीपोलराइजेशन को आगे क्या किया? कंडक्ट किया. इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेटरी. अलग. नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस वन, इनहिबिटरी. इसके एग्जाम्पल में आता है गाबा. कौन आता है? गैमा अमाइन ब्यूट्रिक एसिड. चलो उसको गैमा अमाइन ब्यूट्रिक. इसको मैं एक्सप्लेन, हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस? सी, इमेजिन यू हैव गॉट अ पिंचिंग इंजुरी. मतलब बोर्ड चिमटल दरवाजे के बीच में, क्या बोलते उसको? तुम लोग क्या बोलते इधर सांगली में? हाँ, व्हाट इज योर मराठी वर्ड? चिमटल. सेम, वी आर सेम ऑन दैट. सेम. एनी अदर वर्ड फ्रॉम Vita? Rajendra, you're from Vita, na? No? There's some village nearby, na? Prasanna will tell. Prasanna, what's the word? Chimatla, okay. Dubey ji?
दरवाजे के बीच में आपका उंगली फंस गया, दरवाजे के बीच में आपका उंगली फंस गया समझो मेरी बात। तो कैसा पेन होता है, याद करो कैसा पेन होता है। एक 2 सेकंड के लिए जान जाता है कि नहीं बच्चे लोग। हाउ इज द पेन, व्हाट हैपेंड, क्या बोला, हाँ, हाउ विल द पेन बी बच्चे लोग, फॉर सम सेकेंड्स अनबेरेबल पेन होता है कि नहीं होता है पिंचिंग इंजरी का। बट आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द पेन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ग्रेजुअली। मतलब देयर इज समबडी who is increasing the pain or reducing the pain signals. So see here guys, so this is a neuron which is firing the pain signals to another neuron and then it is going to your brain. Now in order to reduce that pain बच्चे लोग, one of the neuron will release GABA. GABA will act on the dendron and it will stop whom, pain from reaching your brain. So work of GABA is excitatory or inhibitory? So does it relieve your pain? Yes. I hope you got my point. So GABA is one of the neurotransmitters. वो अगर आपके साइनेप्स में आ जाए तो आपके ब्रेन को आपका पेन का आभास होगा, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? Are you able to tolerate the pain of wearing your clothes? You don't feel any pain. If I scratch this, you don't any pain. If you walk on sand, do you feel any pain? Because your body can take that threshold. उतना पेन आपका बॉडी क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है. Okay, I want to discuss something called out of syllabus, but good to discuss with the young people. The crisis that America is facing today with respect to drug abuse, with respect to a drug called fentanyl, it is 100 times more powerful than morphine and it kills around 70,000 people per year in America. What my point? एक ड्रग है जो मॉर्फिन से बहुत, मॉर्फिन क्या है, पेन किलर है। आपके ब्रेन में, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये सब गैबा के रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके बॉडी के पेन के सेंसेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। फेंटानिल जैसे ड्रग्स ये पेन के परसेप्शन को ब्रेन तक जाने ही नहीं देते। As a result of which, if you are under the effect of fentanyl, will you experience any pain in life? No. You will be pain free. But is it natural or illusionary? Illusionary. And an overdose, slight overdose can kill you. What my point? क्योंकि क्या होगा, आप अगर फेंटानिल लोगे तो गाबा का फायरिंग स्लो होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो पेन का परसेप्शन ब्रेन में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब किसी ड्रग एडिक्ट को रिहैब में डालते हैं और उसको फेंटानिल देना बंद करते हैं तो वो बिना चप्पल के सैंड पे चल नहीं सकता, वो भी पेन उसको बर्दाश्त नहीं होता बच्चों। He start shouting. Even some severe drug addicts can't wear their own clothes बच्चों। That brushing of cloth against your skin, it sends irritating signals to their brain. इतना उनका पेन का थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता। What my point? So ये जो ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, these drugs they interfere with your neurotransmitters. दूसरा वाला कॉमन जो है कोकेन, जिसका नाम आपने सुना होगा बच्चों, समझा? देखो एक और अभी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम उसका? डोपामीन या डोपामाइन बोलते हैं उसको। ये जब न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्सिस में आ जाता है तो आपके ब्रेन को फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, यूफोरिया, फीलिंग ऑफ गुड, हाँ, हैप्पी। व्हाट माय पॉइंट? सो व्हेन योर साइनेप्सिस के अंदर क्या फील हो जाता है? डोपामीन सिग्नल जाएंगे आगे और ये सिग्नल्स अल्टीमेटली क्या, कौन सा फीलिंग देते हैं इंसान को? खुशी देते हैं। लेकिन क्या डोपामीन उधर ही रखा जाएगा कि एंजाइम रिलीज की जाएगी? वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा। किसको? डोपामीन को, और फिर से किस में डाल देगा? एक्सॉन में। तो
जो खुशी की फीलिंग है वो रहेगी कि चली जाएगी बच्चों? आप समझ में मेरी बात? कासिफ, आपको ये फ्रेम बहुत अच्छा दिख रहा है, टी शर्ट अच्छा दिख रहा है आपका। ऐसा अगर किसी युवती ने बोला आपको, मैं बोलूंगा तो आप फिर भी बोलोगे इधर आपका क्या कोई फायदा नहीं बोल के। कोई युवती बोलती है आपकी एज की तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा डेफिनेटली। अच्छा नहीं लगेगा अगर ना बोलते तो प्रॉब्लम था आपके अंदर। समझा? आपने एक ट्रुथफुल आंसर दिया और ये सही आंसर है। और मैं पॉइंट कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। सिद्धांत स्मार्ट दिख रहा है तो आज मैंने बोला कैसा लगेगा? क्या फायदा, ठीक है। लेकिन कोई अगर इंपॉर्टेंट आदमी बोल दे आपको तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? वहां पे क्या रिलीज हुआ? डोपामीन। आपने चॉकलेट खाया, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? चॉकलेट खाने के बाद क्या रिलीज होता है वहां पे? डोपामीन। अब ये डोपामीन उधर ही रहेगा कि ब्रेक होता है और फिर से उसको एक्सॉन के अंदर क्या किया जाता है? ले लिया जाता है। नाउ वंस यू टेक कोकेन, cocaine does not allow the dopamine to come back in the axon. As a result of the amount of dopamine in the synapse will increase, giving you a sense of for a making you addict to that illusionary feeling. Illusionary feeling, khayali pulao. I hope you got my point. That is why people become addicted to cocaine because it gives them euphoria, stimulation, alertness, happiness, sense of well-being. Some of them become addicted to opioids, inhibitory, पेन का सेंसेशन नहीं जाता, नम हो जाते हैं। समझा मेरे बात? What's done? दो जलेबी ज्यादा खाएगा ना तो बदहजमी हो जाएगा। और ड्रग के बारे में ऐसा सब मालूम है देखो ड्रग्स के बारे में। फिर मेथ 4 टाकून पितो मेथ काय सांगतो तो मेथ अच्छा ब्रेकिंग बॅड देखा तो उसको अभी मेथ का कुछ थांब पापानं सांगतो तुला मेथ मध्ये खूप इंटरेस्ट आलाय तुला They are dangerous neurotransmitters. Okay, so don't try them. मुंगा इसी clear everybody. So अपने काफी सारे जो मेडिसिन वगैरह रहते हैं